everyone. Let us talk about the novel in Indian English literature. Basically, we'll be talking about the novels which were written in English in India. Okay, इंडिया में ऐसे novels जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए ना सी इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस राइट सो इट वॉज नॉट दैट ईजी एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच वॉज देयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक है बहुत शुरुआती समय से इंग्लिश हमारे साथ रहा हो हमारे इंडिया में रहा हो एज अ लैंग्वेज नहीं ऐसा नहीं था इट वॉज लेटर ऑन इंट्रोड्यूस लाइक ब्रिटिशर्स आए एंड देन उन्होंने कॉलोनीज इस्टेब्लिश की उसके बाद ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई इन इंडिया ओके वेल लेट्स सी द लास्ट पॉइंट फर्स्ट वाओ लास्ट पॉइंट फर्स्ट let me read it for you. So, in the early 19th century, with the introduction of English by colonial administrators, notably Lord Macaulay, in the curriculum of Indian schools, Indian writer begins writing novels in English. You know what really happened? If you know the history of English, that how does it get, how does it enter in our education system? Basically, he is the guy. Lord Macaulay is a major figure जिन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराया इन द सिलेबस और इन द करिकुलम ऑफ इंडियन स्कूल्स यू नो व्हाट आप में से अगर किसी की इंग्लिश वीक हो और अगर आपको लगता हो दैट हु इज़ द वन जिसने ये काम किया है सो ही इज़ द वन ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट्स एंड लेट्स नो अबाउट सम फैक्ट्स रिगार्डिंग नॉवेल्स सो द फर्स्ट पॉइंट सेज let me just zoom in yeah there have been different forms of writing developed in Indian English literature like poetry, prose and dramas. So basically इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहे थे और यू कैन से इंट्रोडक्शन हो रही थी उनकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में फॉर एग्जाम्पल पोइट्री प्रोज ड्रामाज ओके let's move on to the next point. The next point says fiction is the only possible way literary form through which a writer can stay in touch with the common readers. बेसिकली राइटर्स को भी ऐसा लगता था दैट ये जो एक फिक्शन हो गया ना जिसके अंडर आ जाता है शॉर्ट स्टोरी नोवेला एंड नॉवल एज दिस वीडियो इज़ अबाउट नॉवल्स विल बी फोकसिंग ऑन द नॉवल ओनली सो नॉवल्स जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर ये एक ऐसी राइटिंग है जिसके थ्रू हम खुद को रीडर्स से कनेक्ट कर सकते हैं ओके Now, this is very obvious that if you are presenting a real picture of the society, ठीक है अगर आप अपने नॉवेल्स में सोसाइटी की रियल पिक्चर को दिखा रहे हैं तो एक रीडर खुद को कनेक्ट कर पाएगा आपकी राइटिंग से दिस इज़ वेरी ऑब्वियस राइट Yeah, so the next point says the bulk of Indian English literature is in the novel form. This is true. बहुत सारी as I said before, the first point says कि बहुत सारे forms of literature जो हुए उनकी growth हो रही थी like poetry, like prose, like dramas, essays, journals. But then novel जो था इसने अपनी एक जगह बना ली थी इन द ऑडियंस और इन द रीडर्स एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नॉवल की देखी गई एंड सबसे ज़्यादा बल्क में जो पब्लिकेशंस हो रहे थे वो नॉवेल्स की ही हो रही थी ओके इट्स ग्रोथ इन द लेटर आई थिंक आई हैव डिक्टेटेड दिस पॉइंट एनीवेज okay so moving forward we have some very important facts regarding novels so the point says most indian I'm sorry, its most early Indian writing was non-fictional works such as biographies and political essays. You know what? Non-fictional works जो है वो काफ़ी पहले से चलते आ रहे थे नॉवेल्स बाद में इंट्रोड्यूस्ड हुई बट नॉन-फिक्शनल वर्क्स जो थे वो काफ़ी पहले से थे ओके नाउ दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन कि नॉन-फिक्शनल वर्क्स में आते क्या क्या हैं सो सी हियर नॉन-फिक्शंस में आ जाते हैं लेटर्स डायरीज पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज आर्टिकल्स स्पीचेज बाय I'm sorry, it's philosophical works, etc. This began to change in the late 1800s when famous author who wrote mostly in their mother tongue begins to try their hand in writing in English. Now, जो changes है वो तब आनी start हुई जब ऐसे writers जो अपने native language में लिखते थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई बहुत हो गया अब हमने भी ट्राई करना है इंग्लिश में लिखने का सो जब उन्होंने ट्राई किया ना उनकी राइटिंग इतनी वाव थी लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ इट सो हियर वी आर जंपिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट ओके इस पॉइंट को छोड़ के इसको देखते हैं पहले बंकिम चंद्र बनकिम इट्स बनकिम ओके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
wrote Rajmohan's Wife and published it in 1864, making it the first Indian novel in written in English. Okay, so this was the first Indian novel जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी. इट वॉज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ही यूज टू रोट इन बंगाली, बट यू सी इन्होंने इंग्लिश में अपना हाथ ट्राई किया. आई मीन ही ट्राई हिज हैंड ऑन इंग्लिश एंड इन्होंने बहुत ही वाव राइटिंग दी. एंड ऑल्सो ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल मानी जाती है विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1864. नाउ let us go back and इसके पहले वाला point देखते हैं. The letter point says the first book written by an Indian in English was The Travel of Dean Muhammad by Sheikh Dean Muhammad. Okay, so now I'm just hoping that I'm not making you confused because okay, let me just give you a राजमोहन वाइफ जो है ये पहला नॉवल है जिसको इंग्लिश में लिखा गया. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रैवल ऑफ डीन मोहम्मद. नाउ द ट्रैवल ऑफ डीन मोहम्मद एक बायोग्राफिकल वर्क है और यू कैन से ये एक ट्रैवल बुक है जिसमें ट्रैवल्स और जर्नी के बारे में बताया गया है. और ये पहला वर्क है जो कि इंग्लिश में लिखी गई. ओके, पहली वर्क जो कि नॉवल थी और इंग्लिश में लिखी गई वॉज राजमोहन वाइफ. एंड पहला लिटरेचर जो कि इंग्लिश में लिखा गया वॉज, और यू कैन से द ट्रैवल बुक जो कि लिखा गया वॉज द ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद विच वॉज बाय शेख डीन मोहम्मद. Okay, so we have already talked about the first novel written in English in India by Bankim Chandra Chattopadhyay, or you can say a male writer. Now let's see the female writer. Now the female writer Toru Dutt was the first woman who wrote Bianca or the Young Spanish Maiden, which was a novel written in English in India. Okay. The next, or I think it is also the last point. Yeah. The next or the last point says Mulkraj Anand is regarded as the father of Indian English novel. You know what? He has written Untouchable, which is such a masterpiece. You must go through that novel. I'll see if I can make a video on it. Okay. So yeah, this is it about the novels in India in English.